Hello, everyone, and very good afternoon. Hello, everybody. Let's see who are live with us now. So, I am CA Gaurav Chopra, live from Jodhpur, Rajasthan. So, first of all, let's see who all are live now with us. Yes, Mr. Ayush is there, Ms. Tejashwi, Anju, Devgan, Aditya Patel, Nishi Garg, Raj Jha, Anand Sharma. Hello, everyone, and very good afternoon. So this is our first session of June 2024. So जून 2024 का पेपर नंबर 3 का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड द फर्स्ट चैप्टर इज वेरी इजी रेशियो एंड प्रपोर्शन. ओके, so some more people are live now. Yes, Mr. Anand is also there. Raj is asking कैसे हैं आप? Yes, we are good, perfect. Yes, some more have joined now. Biju Paul, Aarti Gupta, Mr. MD, Krishna Sharma, Shubham Khanna, Alluru Raju, great. Santan Roy, Vidhi, Akhil, Venya, Amit, Mohammed Anas, Swapnil, great. Many of you have joined. That's amazing. Aarti, Udyan, Saraswas, KS, Suraj, Madhu, wow, and many more. That's amazing. So फटाफट से शुरू करते हैं हम हमारा आज का सेशन. तो सीए फाउंडेशन में मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड देन स्टैटिस्टिक्स, ये सब मिला करके जो ओवरऑल वेटेज है दैट इज 100 मार्क्स. और हमारा जो पूरा पेपर है दैट इज कंप्लीटली एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ओके, सो 100 एमसीक्यू हमारे पास होंगे एग्जाम में एंड उसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 120 मिनट्स. जी हाँ, तो 120 मिनट्स में आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है. तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे हमें स्पीड अप करना है, कैसे हम फास्ट आंसर करेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सेशंस के अंदर. ओके, तो आज हमारा फर्स्ट सेशन है और स्टार्ट करेंगे हम हमारे इस बेसिक टॉपिक के साथ में. ओके Okay, Sheikh is asking, Miss Sheikh Jamil is saying, how are you, sir? Have heard lot of about you. Your teaching skills is nice. So thank you so much, everyone. And once again, very good afternoon. Okay, Himanshu is requesting, please use Hindi also. Okay, do not worry. We will use mix-up language, Hindi as well as English. So do not worry. And दोनों का कॉम्बिनेशन से हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे टॉपिक के साथ. जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम बेसिक एक पॉइंट को समझ लेते हैं कि आखिर रेशियो होता क्या है, हम किसे कहते हैं रेशियो. तो जब भी हमें रेशियो निकालना है तो एटलीस्ट टू वैल्यूज आर रिक्वायर्ड. कितनी वैल्यूज चाहिए? टू वैल्यूज आर रिक्वायर्ड. और आपको क्लास में थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहना पड़ेगा. इंटरेक्टिव रहने से आपको भी मजा आएगा और मुझे भी पता लगेगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं और आपका जो भी डाउट है वो आप इमीडिएटली पूछ सकते हैं. ओके, यस. तो चलिए, रेशियो का मतलब हो गया कंपैरिजन. तो आपको क्या करना है? कंपेयर करना है. नाउ कंपेयर जब भी करेंगे तो हमारे पास डेटा कितना होना चाहिए? तो एटलीस्ट टू क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड. एटलीस्ट टू क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड, तभी हम उससे रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स से ए एंड बी. ए एंड बी, दीज आर द टू क्वांटिटीज. तो अगर हम दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका फ्रैक्शन ए अपॉन बी, जिसको हम कॉमनली कहते हैं. नाउ दिस फ्रैक्शन इज नोन एज रेशियो, रेशियो ऑफ ए टू बी. अगर आपने फ्रैक्शन फॉर्म में दो नंबर्स लिखे हैं a डिवाइडेड बाय b, तो इसको हम कहते हैं रेशियो ऑफ a टू b. And this can also be written as A, then colon and then B. तो इस पूरे चैप्टर में हम इसका यूज करेंगे A कोलन B. तो जो आपका फर्स्ट टर्म है, फिर आपने कोलन यूज किया एंड देन सेकेंड टर्म. तो जो बीच में कोलन हम यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इज टू. आप उसको बोल सकते हैं इज टू.
या फिर आप कह सकते हैं रेशियो ए रेशियो बी, और ए इज टू बी। नाउ दिस फर्स्ट टर्म इज नोन एज, फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे, जो हमारा टर्म न्यूमरेटर में है, दैट इज नोन एज एंटीसीडेंट। दिस फर्स्ट टर्म इज नोन एज एंटीसीडेंट, ऑलराइट, एंड the second term b is known as consequent. Second term is known as consequent. So one is antecedent and second one is consequent. Okay, चलिए देखते हैं किसी के कुछ क्वेश्चन हैं, तो वो भी हम साथ साथ में लेते रहेंगे, so do not worry. Subhitra is saying, good afternoon. I am from South India, and so please explain in English. We don't know Hindi. Yes. See, I will use complete English and repeat the same thing in Hindi also, so that ना तो हिंदी वाला कुछ मिस करेगा और ना कोई इंग्लिश वाला स्टूडेंट कभी मिस करेगा. So both of you, both like whole of the India will be able to understand, right? So those who understand English, those who understand Hindi don't have to suffer. किसी को भी सफर नहीं करना पड़ेगा. I am using both the languages 100%. Okay. तो चलिए मैं एक बार फटाफट से रिपीट कर देता हूं. हिंदी के अंदर भी रेशियो का मतलब हो गया कंपैरिजन, और कंपैरिजन हमें कितनी क्वांटिटी का करना है, कम से कम दो क्वांटिटीज हमारे पास होगी जिसको हम कंपेयर करेंगे. उसमें ए एंड बी को अगर हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, तो ए को हम बोलेंगे एंटीसीडेंट और बी को बोलेंगे क्या, कॉन्सिक्वेंट. नाउ दिस इज टर्म्ड एज ए रेशियो बी, ऑलराइट, और ए इज टू बी. Now, Madhu is asking, we have to write these notes. Yes, it will be better if you all write all these notes at present, so that आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और लिखने के साथ साथ आपके माइंड में वो चीजें रैव हो जाती है, आप उसको इजीली लर्न रख पाएंगे, याद रख पाएंगे, है ना. तो जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपको याद रहने वाला है और उतना ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी. ऑलराइट, so let's take some values. So let's say 5 ratio 6. So 5 ratio 6. तो फर्स्ट क्वांटिटी के हमने कितने लिए हैं, 5 यूनिट्स, एंड सेकंड क्वांटिटी के कितने लिए हैं, 6 यूनिट्स. नाउ रेशियो के लिए हमने ये तो कह दिया कि दो क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो दोनों क्वांटिटी सेम काइंड की होनी चाहिए, तो उस रेशियो का कुछ मतलब निकलेगा, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है. सो लेट्स से इफ आई एम टेकिंग 5 hours, 5 hours, and on opposite side I am writing, let's say 50 kg, 50 kg. So this is not an appropriate ratio. ये एक appropriate ratio नहीं है. क्यों नहीं है? Because यहाँ पर hours and kilogram both are different units. दोनों यूनिट्स अलग अलग है, तो जब तक यूनिट अलग अलग है हम उसका रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो रेशियो के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट मस्ट रिमेन सेम. अगर आपके पास 5 hours है, तो ऑपोजिट के अंदर भी आवर्स होने चाहिए, लेट्स से 10 hours. तो जब दोनों का यूनिट सेम है तभी हम रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं. सो व्हाट इज द रेशियो, 5:10. ओके, नाउ वन मोर थिंग हियर, जब भी हम रेशियो निकालेंगे उसको सिंपलीफाइड फॉर्म में आपको लिखना है. जितना सिंपलीफाई हो सके, कैंसिल होने के बाद जो आपकी वैल्यू बचेगी उस तरह से आपको लिखना है. तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 5. सो फाइनल रेशियो बिकम्स 1:2. 1:2. So this is your final ratio. तो इस तरीके से हम ऑलवेज क्या कर सकते हैं, रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन टिल हियर? ओके, वंशिता इज आस्किंग, सीए इंटरमीडिएट की स्टूडेंट हूँ बट बीओएस पर इंटर की क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, रजिस्टर नहीं हो रहा है. सी फॉर इंटरमीडिएट इंक्वायरीज यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द हेल्पलाइन नंबर, आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाएगा. ओके, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. और अभी तक जो मैंने पढ़ाया है इसमें अगर किसी को कोई डाउट्स है देन लेट मी नो. ओके, रेणुका इज आस्किंग माय कमेंट्स आर विजिबल. यस रेणुका, इट इज परफेक्टली विजिबल. Samir is asking, if we have doubts or problem in solving the question, then how we can clear. Okay, see,
अगर आपको लाइव क्लास में डाउट होता है, यू कैन ऑफ कोर्स आस्क इट हियर, एंड उसके बाद में अगर आपको कोई डाउट होता है, देन आई विल शेयर यू द प्लेटफॉर्म, आप वहां पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आप डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, सो डू नॉट वरी। ऑलराइट, ओके। देन Raja says, can ratio be in decimal? रेशियो को हमेशा सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना है, तो अगर कोई वैल्यूज डेसिमल में गिवन है तो उसको आप डेसिमल को हटा देंगे एंड उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू नॉर्मल इंटीजर फॉर्म। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ अगर हम एक रेशियो को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, द रेशियो रिमेन्स सेम। लेट्स टेक वन एग्जांपल। If I have written the ratio is 3 is to 4 or 3 by 4, and if you are multiplying both these numbers by a common number, then ratio remains same. Like let's say if you have multiplied both of them by 2, तो result क्या है आपका 6 by 8, and again on cancellation you will get 3 is to 4। 3:4। तो अगर आप दोनों साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, देन रिजल्ट रिमेन्स सेम, तो रेशियो रिमेन्स अनअफेक्टेड। ऑलराइट, जस्ट एक बेसिक पॉइंट है, अदरवाइज वी ऑलरेडी नो दिस। सो यहां पर हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। बोथ द टर्म्स ऑफ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। नंबर शुड बी नॉन जीरो। अगर आपने जीरो यूज कर लिया, देन everything becomes zero, there will be no ratio. Then ratio is always expressed in the lowest terms or the simplest possible term. So let's take one example. If the given ratio is 12 is to 16, if the given ratio is 12 is to 16, then now you have to simplify. अब आपको सिंप्लीफाई करना है एंड बताना है कि क्या आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ओके, so if you cancel this with the help of 4, so it becomes 3 ratio 4। 3 ratio 4, this is your final ratio। All right, so Manya is asking, explain once again in English. Okay, do not worry. So previously what I had taught, if the ratio is, let's say, 3 is to 4 or 3 by 4, and if you multiply and divide by the same number, if you multiply and divide by the same number, then the ratio remains same. It will not change. The ratio will not change because you are multiplying and dividing by the same number. Okay. Then ratio is always written in the simplest form. So in this question, we have done the cancellation, and after cancellation, the final ratio is 3 is to 4. All right. Now, let's take few more examples. Now this time you have to find out the ratio between 150 grams and 2 kilograms. 150 grams and 2 kilograms. So always, first of all, check the units. These two units are different. One is grams and other one is kilograms. So both are different. So whenever both are different, try to make them same unit.
If possible, make them same unit. So one is grams and second one is kilogram. So we can convert kilogram into grams easily by multiplying by 1000. So यहाँ पर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया एंड both the quantities are converted into grams. दोनों क्वांटिटी अब किस में आ चुकी है? ग्राम्स के अंदर आ चुकी है. And now you can find out the ratio. So let's cancel the zero first. तो आपने zero को cancel किया. Okay. Then you can cancel with the help of 5. तो 5 की टेबल से आप cancel करेंगे. What is left? 3. And here 40 is left. So the final ratio is 3 is to 40. 3 is to 40 is your final ratio. So in this way, we can simplify the ratio, right? Okay, let's take one more example. So this time it is 25 minutes, 25 minutes and 45 seconds. Now again, units are different. So you can convert the units. Minutes को आप convert कर सकते हैं into seconds just by multiplying 60. Yes, आपको 60 से multiply करना है. Okay. Komal is saying my comments are visible. Yes, Komal, it is perfectly visible. And saying your teaching is nice. Thank you so much, Komal. Yes, I can see comments for each and every one, right? So do not worry. So now let's convert. Minutes को convert करने के लिए आपने multiply किया seconds 60 से. Now 25 into 60 is how much? 1500. So it is 1500 seconds. Ratio 45 seconds. Now you can cancel with the help of 15. You can cancel with the help of 15. It becomes 100 and it is 3. So the final ratio is 100 is to 3. 100 is to 3. This is your final ratio. Okay. Okay, Motiani says we are taking screenshot right now. Okay, yes, you can do it. You can take screenshot right now, and after the session, you can note down in your notebooks that also, well, that is also okay. Do not worry. But जब मैं आपको क्लास में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, then you have to answer. So most of you are giving the answer. That's perfect. That's very great. Okay, nice. Now the next question is a bit tricky. Not much, but yes. So let's discuss the next one. Now this time, the question is given two ratios. The first one is 2 1/3 compared with 3 1/3. This is a first set of ratio. And second ratio is also given 3.6 ratio 4.8. Okay. So these are the two ratios. Now question is asking, find out which ratio is greater. कौन सा ratio greater है? This you have to find out. That means we have to use this sign, greater than or less than. This kind of sign you have to use. So first of all, let us simplify the ratio. Okay. What is the first step? To simplify the ratio. Now the first ratio is given into fraction. तो हम उसको properly कैसे convert करेंगे? Let us understand. So as we all know, in the first case, 3 into 2 is 6, plus 1 is 7. So you can write this 7 by 3 ratio. 3 into 3 is 9, plus 1 is 10. So it becomes 10 upon 3. So 7 by 3 ratio 10 by 3. So this is your ratio. Now similarly, the second ratio, you can cancel with the help of 12, or you can say 1.2. If you cancel with the help of 1.2, it becomes 0.3 ratio 0.4. Now, remove the decimal on both the sides. दोनों तरफ एक एक decimal place को हम shift कर सकते हैं, or you can say just multiply by 10 on both the sides. Okay.
आई रिपीट, जब भी आपको डेसिमल में दे रखा है तो वो डेसिमल हटाने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय 10 और बाय 100. तो आफ्टर डेसिमल सिंगल प्लेस इज देयर. आफ्टर डेसिमल एक डिजिट अवेलेबल है, देन मल्टीप्लाई बाय 10. If two digits are there, multiply by 100. Okay. So now, if you multiply by 10, the ratio is 3 is to 4. All right. Now, दोनों तरफ आपने रेशियो को थोड़ा सिंप्लीफाई तो किया, बट विच इज ग्रेटर? ग्रेटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक सिंगल फिगर में इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो फॉर कन्वर्टिंग इनटू सिंगल फिगर, लेट्स डिवाइड देम. लेट्स डिवाइड देम. 7 by 3 upon 10 by 3. So what is the result? 0.7. 0.7. Because A ratio B can be written as A upon B. All right. A ratio B can be written as A upon B. तो हमने जैसे इसको लिखा, it becomes 0.7. On the other hand, 3 by 4, 3 by 4 will become 0.75. It will become 0.75. Now you can easily put your sign which ratio is greater. So of course, second ratio is greater. Second ratio is greater. So this is the final answer. All right. Okay, Madhu is asking if there is root in the question, then how to solve? Yes, we can do it. Do not worry. Then Raj is asking, how can I manage 12th with CA foundation? Okay, we will discuss this also. Yes, so Ravina has given first is greater. Aarti is saying second one is greater. Shabnam is saying first is greater. Raj is saying I'm understood. Okay, okay, perfect. Shivanshi is asking my message is visible. Yes, Shivanshi, it is perfectly visible. Do not worry. All right. So 0.75, this ratio is greater. Now the next thing. If let's say there is a ratio 3 is to 4. If we inverse the ratio, that means it becomes 4 is to 3. तो क्या दोनों का मीनिंग सेम है और इट बिकम्स डिफरेंट? अगर हम 3 is to 4 को कभी 4 is to लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? आंसर इज नो. द मीनिंग गेट्स चेंज. दोनों का मीनिंग चेंज हो जाएगा. लेट्स से 3 denotes A and 4 denotes B. A complete a task in 3 hours and B complete the same task in 4 hours. But if you inverse the ratio, it becomes A is completing in 4 hours and B is completing in 3 hours. The meaning gets changed. तो उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगा. जबकि एक की स्पीड फास्ट है, हमने रेशियो को उल्टा लिखा, तो एक की स्पीड स्लो हो जाएगी. Alright, that means we cannot inverse the ratio. हम उसको डायरेक्टली इन्वर्स नहीं कर सकते हैं. अगर आपको इन्वर्स करना है तो फिर आपको पूरा बी एंड ए को भी करना पड़ेगा. सो यू कैन राइट इन दिस वे बी रेशियो ए, देन इट becomes 4 is to 3. All right. Now, based on this simple, based on this simple concept, now there are some different questions. Okay, Madhu is asking, I haven't taken the screenshot, so please at the end of the class, just scroll once for screenshot. Yes, do not worry. Let me know 5 minutes before. So I will scroll you at different pages and then you can take all the screenshots. Okay. Okay, Sheikh Jamil, your name is Farin. That's great. Okay, do not worry. Then is calculator allowed in exam? Yes, it is allowed 100%. Do not worry for that. Okay.
Pallavi Raj is asking. Yes, Pallavi, you can ask your doubts here. Do not worry. Aarti Gupta is in class 11 and she's asking, can I start now or later? See, when you are in class 11, of course, you can go hand by hand with CA Foundation because you are having 2 years. If you are doing step by step, अगर आप अभी से ही step by step साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं, तो बाद में आपको ज्यादा burden feel नहीं होगा. So it will be better if you start now. Okay. Renuka is saying your teaching is amazing, so thank you so much. Okay, now let's come on this illustration number 7. Illustration number 7. And जिसके पास study material है, ना study material always open करके रखे because we will be discussing everything from the study material. And अभी अगर किसी के पास hard copy available नहीं है, then you can download it from the website. From ICAI के website से आप उसको download कर सकते हैं and उसके according आप PDF से पढ़ सकते हैं. If you want, you can even take the printout also. Okay? सो क्लास में डिस्कस करते वक्त आपके पास वो पीडीएफ या प्रिंट आउट ऑलवेज रहना चाहिए. नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 7. लेट्स सी व्हाट इट सेज. Ronak weighs 56.7 kilograms. If he reduces his weight in the ratio of 7:6, then find his new weight. तो उसका न्यू वेट कैलकुलेट करना है. ओके. So we are talking about Ronak's old weight and new weight. So Ronak old weight and here we are writing new weight. तो रौनक ने बहुत मेहनत की है, अपना वेट कम किया है in the ratio of 7:6. All right. Now what is the old weight? Old weight कितना है वो हम लिख लेते हैं. Old weight is 56.7 and new weight is required. New weight आपको find out करना है. Okay. So 6 multiplied by 56.7 in this way, you can write this down and you will get your answer. All right. So what is the final answer? It is 48.6 kilograms. 48.6 kilograms. So this is the new weight. तो रौनक का नया वेट अभी कितना है? 48.6 kilograms. तो इस तरह से उसने अपना वेट रिड्यूस किया है, वेट को चेंज किया है. Okay, perfect. Then let's say Anjali is saying, I have seen your previous videos also. That's great. Krishna is asking, please बताइए how many marks is required for passing. See, in CA Foundation, always you have to see 4 papers are there. So total 400 marks, and for passing you require 200 marks. If you see per subject, so per subject is 100 marks and you require 50% in aggregate. आपको overall कितना चाहिए? 50% to pass the exams. And paper number 3 and 4 is having negative marking because they are MCQ. So paper number 3 आपका mathematics, statistics, logical reasoning and then paper 4 economics. इन दोनों में आपका negative marking रहेगा. Overall minimum marks आपको secure करना है 50
person to crack the examination. Okay, next. Now the next one seems different. This is a kind of word problem. एक word problem आपको दे रखा है, and from this word problem we have to get the answer. Okay, Madhu is asking, this class is getting recorded or not? Yes, this is recorded, and you can watch this on YouTube channel also, ICICA Tube channel also, as well as on the ICAI application also. Okay. So I think most of you have seen the previous lectures also. So Aarti has also seen. Then Ritu is saying paper 1 and 2 is subjective. Yes. Angel is asking maths is a bit easy or hard. See, it only depends on you. Because एक सब्जेक्ट किसी के लिए टफ होता है, किसी के लिए इजी होता है, सो वो हम ही होते हैं जो उस सब्जेक्ट को इजी या हार्ड बनाते हैं, कोई और नहीं बनाता है. सो इफ यू प्रैक्टिस अ लॉट देन हर सब्जेक्ट आपका इजी बन सकता है. एंड सी फाउंडेशन का मैथ्स आई विल से इट इज very much easy or you can make it easy. Okay, okay, so now let's move on. Example number second. The ratio of the number of boys to the number of girls in a school of 720 students is 3:5. So boys and girls का ratio given है. So let's write this. Boys ratio girls, it is 3:5. Then one more information is available. There are 720 students in the school. If 18 new girls are admitted in the school, now this is the new admission, 18 girls are admitted, then find how many new boys may be admitted. तो new boys को कितना admission देना है, so that the ratio of number of boys to girls may change to 2:3. अब यहाँ पे क्वेश्चन दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर दिख सकता है, बट आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, इट विल बी इजी. ओके, नाउ सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन. Just find out the number of students. There are 720 students. Now, how many are boys? So 720 multiply by. Now, we are dividing 720 into 3:5 because 3 denotes boys and 5 denotes girls. Okay. So, we are dividing this into 3:5. How to divide? Write 3 numerator divided by total 3 plus 5, 8. You have to write total in the denominator. Similarly, for girls also, 720 multiply by 5/8. So 5 denotes girls and 8 denotes the total. Now let's calculate. So there are 270 boys and 450 girls. This is the current position. Okay, this is the current position. अभी हमने कुछ भी change नहीं किया है. Now next what we have to do, we have to make the ratio 2:3. हमें ratio कितना बनाना है? 2:3 बनाना है. So for that 18 new girls are already admitted. 18 girls are already admitted. So add 18. So total number of girls became 468. Now, how many boys are to be added? So add x. Let the number of boys be x. So we are adding x boys. So total number of boys will become 270 plus x. This is the next step. So first step में आपने क्या किया? 720 को divide कर दिया into two parts. That is 3:5. And then second part में हमने दोनों को add कर दिया. Number of girls को add किया है 18 and number of boys कितने लिए हमने? Okay. So these are new number of boys and new number of girls. अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 2:3. 2:3 is the new ratio of boys and girls. ये आपका नया रेशियो है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करना है. So let's calculate 270 plus x upon 468. Numerator is boys, denominator is girls. Compare this with the given ratio, that is 2
is to 3. So you have to write 2 upon 3. Just write 2 upon 3. Now do the cross multiplication. अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. So 270 into 3 gives 810 plus 3x is equal to 936. So from here you can calculate and find out the value of x. So final answer is 42. 42. So Anand Sharma has given the answer. 42 boys are to be added. Saurabh has also given the answer. Perfect. So let me explain once again in Hindi also. So एक स्कूल में कितने स्टूडेंट्स है टोटल 720 स्टूडेंट्स हैं और उसका जो गिवन रेशियो है दैट इज 3:5. सो 3:5 का रेशियो है. तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, ये फाइंड आउट किया कि प्रेजेंट में हमारे पास कितने बॉयज है एंड कितने गर्ल्स हैं. तो उसके लिए 720 मल्टीप्लाई बाय 3/8 एंड 720 मल्टीप्लाई बाय 5/8. सो यहां से आपका कंक्लूजन क्या निकला, एट प्रेजेंट there are 270 boys and 450 girls. ओके अब आपको क्वेश्चन ने कहा है न्यू रेशियो क्या होना चाहिए. न्यू रेशियो इज 2:3. 2:3. उसके लिए आपको कितने बॉयज ऐड करने पड़ेंगे इफ 18 गर्ल्स आर एडेड. तो अब हमने क्या किया, 18 गर्ल्स को ऐड कर दिया एंड नंबर ऑफ बॉयज को कितना लिया. सो द टोटल नंबर ऑफ बॉयज becomes 270 plus x and total number of girls becomes 468. अब इससे आप क्या करेंगे, रेशियो को कैलकुलेट करेंगे. ऑन वन साइड वी हैव केप्ट द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स. ऑन द अदर साइड वी हैव रिटन द सिंप्लीफाइड रेशियो. दूसरी तरफ हमने क्या किया है, सिंप्लीफाइड रेशियो लिखा है. नाउ जस्ट मल्टीप्लाइंग देम एंड गेट द आंसर. तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और x का वैल्यू फाइनली आपका आ चुका है 42. So this x denotes number of boys. Okay. So Ansh is asking, is there any difference in December book and upcoming June exam? See, almost the things are same. In case कहीं पे corrections था तो कुछ corrections हो गए and one chapter is replaced because one new chapter is added, that is sampling. Okay, so that is the main difference. Otherwise, most of the things are already same. Okay. So Roshan Kumar has also joined. Kanak is saying, yes, Kanak, you are visible. Now, this we have done. Now, let's move on the next point, which is inverse ratio. Now, inverse ratio का मतलब क्या है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया. If a ratio is A:B, if the ratio is A:B, then inverse का मतलब क्या होगा, B:A. B:A. तो कई बार इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आता है. Question says if the given ratio is 4:5, then find out the inverse ratio. तो आपको inverse ratio कैलकुलेट करना है. Then simply what you have to answer, 5:4. That's it. सिर्फ आपको इतना सा आंसर करना है and this will be done. Okay. A:B, B:A, 4:5, 5:4. This is known as inverse ratio. Inverse ratio. Okay. Yes. So now Anjali says it is clear, perfect. Tejas is saying easy hai. Nice. Shiva Kumar is saying done. Okay, perfect. Now next is the properties of ratio. Properties of ratio. Let's discuss one by one. The first thing, if we say A:B is the given ratio. A:B is the given ratio, and if A is greater than B, A is greater than B, then it is known as greater inequality.
greater inequality. And if A is less than B, it is known as lesser inequality. That is known as lesser inequality. Okay. This is point number one. Greater inequality and lesser inequality. Now, second one, compound ratio. Second point is compound ratio. Now, let's say A is to B is the first ratio and C is to D is the second ratio. Now, compound ratio का मतलब होता है joint ratio. दोनों का आपको क्या करना है? Combine करना है, join करना है. To multiply the first digit and the second digit. So A will get multiplied by C and B will get multiplied by D. So AC ratio BD. AC ratio BD. So this is your final answer. So this is known as the compound ratio. Okay. This is simply known as compound ratio. Great. Now, next thing is Manish Kumar is also saying easy. Rashid is saying solving additional question bank is important. आप जितने question exam solve करोगे उतना better रहेगा. So always solve additional questions as well. All right. Himanshu is asking you are from Jaipur, Rajasthan. I am from Jodhpur, Rajasthan. Okay. So Rajesh, yes, Rajesh, your comment is visible. Perfect. Renuka is saying, I am a non-math student, but I am getting understood the concepts. That's very cool. Okay, so the two properties we have done. Now the third one. Third property is also very easy. Third one is known as duplicate ratio. Duplicate ratio. Now, what is the meaning of duplicate ratio? If A ratio B is the given ratio, then its duplicate ratio will be, just find out the square of these numbers. A square ratio B square. It becomes duplicate. तो ये क्या बन गया आपका डुप्लीकेट रेशियो. तो इन शॉर्ट ए रेशियो बी को हमें ए रेशियो बी के साथ में ही क्या करना है, कंपाउंड रेशियो फाइंड करना है. डुप्लीकेट का मतलब क्या हो गया, टू टाइम्स. तो ए रेशियो बी को आपने टू टाइम्स लिखा और फिर क्या फाइंड आउट किया, इसका कंपाउंड रेशियो. तो जैसे आपने कंपाउंड रेशियो फाइंड आउट किया, इट बिकम्स ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर. So this is the duplicate ratio. So let's say if the given ratio is 2 is to 3 and you have to find out the duplicate ratio. So what will be the result? So 2 square becomes 4 and 3 square becomes 9. So 4 ratio 9 will be the duplicate ratio. So it will be the duplicate ratio. All right. Then Nusrat Fatima is asking, how can I solve with you after the class? You can download the application Students Clinic from the Play Store, and then you can connect with me after the classes also. So I will help you out. Do not worry. Okay. So you can download Students Clinic and you can get connected. No need to worry. All right. Now, duplicate ratio we have done. Now, the next is sub-duplicate ratio. Sub-duplicate ratio. So, let's write the next one. Sub-duplicate. Now, again, if A ratio B is the given ratio, then its duplicate ratio will be square root of A and square root of B. तो दोनों नंबर्स का आपको क्या कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना है. इट विल बिकम सब डुप्लीकेट रेशियो. नॉट डुप्लीकेट, इट विल बी सब डुप्लीकेट रेशियो.
All right. Let's say if the number is 25 ratio 36 and you have to find out sub duplicate ratio. तो आप क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। 25 का रूट होगा कितना, 5, एंड 36 का रूट होगा 6। तो सब डुप्लीकेट रेशियो बिकम्स 5 रेशियो 6। 5 ratio 6. Yes, Mahin, your comments are visible. If A is to B, then it is a ratio of equality. It is correct. Yes. So Mahin is saying if A is equal to B, yes, of course. If दोनों ratios, अगर दोनों की value equal है, one is A and other one is B, and both the numbers are equal, then it is known as equal ratio, or it is the equality. Perfect. Shiva is saying I am from Lakhimpur Kheri. Okay. All right. Now, let's talk about the next one. Point number 5, triplicate ratio. Triplicate ratio. Now, what is triplicate ratio? That means we have to take first number 3 times and second also 3 times. So it will be A cube ratio B cube. दोनों नंबर्स का आपको क्या करना है, क्यूब फाइंड आउट करना है. सो A cube ratio B cube. If let's say 2:3 is the given ratio, then its triplicate ratio will be 2 cube. So 2 cube is 8 and 3 cube is 27. So 8 ratio 27 is your answer. It will be your answer. So सब ट्रिप्लीकेट में क्या करना पड़ेगा, आपको क्यूब रूट करना पड़ेगा. यहाँ ट्रिप्लीकेट है तो आपने क्यूब किया, और अगर हम इसको सब ट्रिप्लीकेट में कन्वर्ट करेंगे, write the sub triplicate ratio, then it will be cube root of A and cube root of B. तो दोनों तरफ आपको क्या लगाना रहेगा, cubic root. So let's say if we are writing 64 ratio 125, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब रूट निकालेंगे 64 का एंड 125 का. तो अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है, देन ऑफ कोर्स गो इट फर्दर. तो 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब. So it simply becomes 4, and 125 is 5 cube. So 4 ratio 5. 4 ratio 5. Okay. Okay, Bishal Sonar has joined and he's saying I'm from Nepal. That's great. So few students are from Nepal also. That's very good. Good to see you, Bishal, here. Okay, Sheikh Jamil is asking about compound ratio. Okay, let's take one example of compound ratio also. So compound ratio में अभी हमने क्या डिस्कस किया था, if A is to B is the first ratio and C is to D is the second ratio. आपको क्या करना है, दोनों का कंपाउंड करना है. चलिए फॉर सिंप्लिसिटी मैं उसको इसके नीचे ही लिख देता हूं. और आपको क्या करना है, कंपाउंड रेशियो फाइंड आउट करना है. तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई एंड सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे. दैट विल बी योर आंसर. सो AC रेशियो BD. AC ratio BD. If let's say 2:3 is the first ratio and 4:5 is the second ratio, then what will be your result? 2 into 4 becomes 8 and 3 into 5 becomes 15. So this is your compound ratio.
So in this way, you can easily calculate your ratios. Okay, understood? Perfect. Then Ritika Joshi is talking about point number 6, that is subtriplicate ratio. Okay. Subtriplicate ratio, let's take one more example. If let's say one number is 729 and other number is 216, and now you have to find out triplicate ratio. Now सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में आपको क्या करना है, क्यूबिक रूट फाइंड आउट करना है. ओके, एंड 216 का भी आप क्या निकालेंगे, क्यूबिक रूट. अब कैसे आप लोग निकालेंगे, सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू विद द हेल्प ऑफ एलसीएम. यस, एलसीएम आई थिंक आप सभी को आता होगा. तो 729 किससे डिविजिबल है, 3 से. कितना आ जाएगा, 2, 4 एंड देन 3. Again divide by 3, 81, then again 3, 27, then 3, 9, 3, and then finally it stops. Now अभी आपको क्या करना है, जब भी क्यूबिक रूट होता है, make a pair of 3, make a pair of 3. So what is your answer, 3 into 3, that is 9. Your answer is 9. Ratio on other side क्या available है, 216. So for 216, again इसका भी LCM कैलकुलेट करते हैं, 128, then 56, 28, then sorry हमने इसको थोड़ा सा गलत लिखा, 64, then it becomes 32, then it becomes 16, then 8, then again 2, and then 1. Now अब आपको क्या करना है, पेयर्स फॉर्म करने हैं. Oh, I have calculated for 256. So इसको थोड़ा सा हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं. मैंने 256 का कैलकुलेट कर दिया है. So let's remove this and solve for 216. Okay. तो 216 को आप करेंगे पहले 2 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा आपका, 108. Then 54, then again 27, then 3, again 3, and then 1. All right. So now again make a pair of 3, and again one more pair of 3. So what will be your result? It is 2 multiplied by, that is 6. Further you can simplify and get your answer. So final ratio will be 3:2. 3:2. Okay. So 3:2 is the final answer. Sushma is asking, teach us the calculator tricks. See, at present, we have not yet reached that point जहाँ पे calculator की required है. अभी तक हमने जो भी कुछ किया है, यहाँ पे calculator की requirement नहीं है. जैसे ही आती है, I will teach you the tricks. So do not worry. Just wait for the right time. Okay. Now, यहाँ पे मैंने एलसीएम क्यों कैलकुलेट किया, ताकि जिसको ओरली नहीं समझ आया उसको लिए मैंने एलसीएम करके दिखाया है. अदरवाइज आपको ये क्यूब्स एंड स्क्वायर्स थोड़ी बहुत लर्न होने चाहिए, जो हम एलआर में भी डिस्कस करेंगे, वहां भी काम में आएगा. आपको नॉर्मली हम क्लास में भी लर्न करेंगे क्यूब्स. क्यूब्स अप टू 11 तक के सारे क्यूब्स लर्न होने चाहिए बाय हार्ट, एंड अप टू 30 स्क्वायर्स अप टू 30 ये लर्न होनी चाहिए. ये लर्न होने के बाद जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड है, स्पेशली एलआर के अंदर और बहुत सारी जगह पे इंप्रूव हो जाएगी. तो इसलिए ये कुछ चीजें हैं जो आपको लर्न करनी रहेगी. तो वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, आपको कब उसके ऊपर फोकस करना है, कब उस पर वर्क करना है. राइट. ओके, सो दिस वी हैव डन. नाउ द नेक्स्ट वन, 6th point according to this, continued ratio. Continued ratio is the relation or comparison
between the magnitudes of three or more quantities of same kind. तो जब थ्री क्वांटिटीज है या उससे ज्यादा अवेलेबल है तो उन सबको एक साथ में लिखना, दैट इज सिंपली नोन एज कंटिन्यूड रेशियो. सो लेट्स से illustration is given. If rupees 200, 400 and 600 is given, इसको आपको एक साथ में लिखना है. Then you will write rupees 200 ratio rupees 400 ratio rupees 600. तो तीनों को आपने एक साथ में लिखा. That is simply the continued ratio. Further इसके आगे questions आएंगे, वहां भी हम करेंगे. Now you can cancel with the help of 200 and your final ratio will be 1:2:3. Okay. ओके, अंश इज आस्किंग टेबल्स कहाँ तक लर्न करनी है. ऑफ कोर्स अंश आपको 25 तक टेबल्स लर्न होनी चाहिए. ऑलराइट. अंश इज सेइंग मैं इससे थोड़ा आगे चलता हूँ. क्यूब और स्क्वायर तो मैं कर ही लूंगा, साथ में टेबल्स भी लर्न कर लेता हूँ. दैट्स वेरी कूल. Then Zoya is asking, I have ordered the books for June exams and two times, but it's been 1 month, but I haven't received the books. And I have done everything like email. Okay, do not worry because न्यू कोर्स है, कई बार बुक्स के लॉट प्रिंट होने में भी टाइम गैप आ जाता है, तो समटाइम्स इट माइट टेक सम टाइम. सो बट फिर भी आप हेल्थ सेंटर पे बात करके रखें ताकि आपको इजीली वहां से कनेक्शन रहेगा कि बुक्स कब तक आपके पास आ सकती है. राइट. ओके. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में भी कई बार आ चुका है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे जस्ट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स. तो 10 मिनट्स का फटाफट से ब्रेक ले लेते हैं. आप लोग भी वापस आ जाएं एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस टॉपिक. ओके.
Ready, sir? So let's continue now. I think everyone has joined again. So example number one, the monthly income. The monthly income of two persons are in the ratio of 4 is to 5, and their monthly expenditure are in the ratio of 7 is to 9. So the first ratio is about income and second ratio is about expenditure. Okay. Now they are saving rupees 50 per month. Find their monthly income. तो आपको क्या करना है, उनका मंथली इनकम कैलकुलेट करना है। तो मंथली इनकम कैसे कैलकुलेट करें, आपको रेशियो पता है, इनकम का रेशियो पता है, एक्सपेंडिचर का, एंड देन दोनों का सेविंग्स भी पता है। तो फिर हम यहाँ पे सबसे पहले क्या समझते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि अगर हम देखें, लेट द इनकम बी 4x एंड 5x, क्योंकि इनकम 4 एंड 5 दिया हुआ है रेशियो में, तो वो 40 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने उसको क्या अज्यूम किया, let the income let the income of first person be 4x and for second person it will be 5x. ओके। अब एक बात हमें पता है, अकाउंट्स में हम पढ़ते ही हैं, क्या पढ़ते हैं हम अकाउंट्स में, इनकम में से अगर आप सेविंग्स को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर। या फिर हम ऐसा कहते हैं, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स गिव्स यू इनकम। कैसे भी लिख सकते हैं, मीनिंग इज सेम, expenses plus savings is equal to income, right? या फिर हम ऐसा लिखे, इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो कैसा भी आप लिख सकते हैं। तो अब सब कुछ क्योंकि रेशियो के फॉर्म में है, तो हम दोनों को लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो। फर्स्ट फिगर हमारा 4x है, सेकेंड वाला 5x है, एक न्यूमरेटर में दूसरा डिनोमिनेटर। दोनों का सेविंग कितना है, 50 रुपीज। तो दोनों में से आपने क्या किया, 50 रुपीज को लेस कर दिया। ये लेस करने के बाद क्या आना चाहिए, एक्सपेंडिचर आना चाहिए, और वो कितना गिवन है आपको, 7:9। सो यू कैन राइट 7/9। सो दिस बिकम्स योर इक्वेशन, दैट्स इट। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में क्या था, इस इक्वेशन का फॉर्मेशन, इस इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना है। और इसको फॉर्म करने के लिए बेसिक अकाउंट्स का हमें नॉलेज चाहिए था कि इनकम में से अगर हम सेविंग्स को माइनस कर देते हैं, then you will get expenditure. Okay, now just do the cross multiplication and find the value of x. तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 into 4x gives 36x। 36x minus 450 is equal to 35x minus 350। तो x is equal to 100। x का वैल्यू 100 आ चुका है। नाउ क्वेश्चन ने क्या पूछा, फाइंड द इनकम ऑफ बोथ द पर्सन। फर्स्ट पर्सन की इनकम क्या है, 4x। तो 4 multiplied by 100 gives 400, and 5x, 5 multiplied by 100 gives 500। So 400 and 500, this is the final income of the two persons. Okay, right. So I think everyone has got the answer. Perfect. So this was example number 1. Now this second one is also important and ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। मेन थिंग है, फिगर्स टू फिगर सेम एग्जाम में आए कोई जरूरी नहीं, बट कॉन्सेप्ट तो वही रहता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दें कि कौन सा फिगर मिसिंग है और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ये एक बेसिक मैथमेटिकल ट्रिक रहती है। ओके। Now, the ratio of the prices of two houses was 16:23. Houses की price का ratio दिया हुआ है 16:23. 2 years later, when the price of the first has increased by 10%. First house की price बढ़ गई है कितने से, 10% से, and
सेकंड की प्राइस इंक्रीज हुई है बाय ₹477। इंक्रीमेंट दोनों में है। फर्स्ट में इंक्रीमेंट आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सेकंड में इंक्रीमेंट गिवन है इन टर्म्स ऑफ रुपीज। देन द रेशियो ऑफ द प्राइसेस बिकम्स 11:20। अब लास्ट का जो फाइनल रेशियो दिया है वो कितना दिया है? 11:20। आपको क्या फाइंड करना है? ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करना है। तो अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, फिर से हम वैसा ही लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? लेट द प्राइसेस ऑफ हाउस बी 16x एंड 23x रेस्पेक्टिवली। तो पहला स्टेप है, आपने उसको प्राइस को अज्यूम कर लिया 16x एंड 23x। उसके बाद में आपको क्या करना है? इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें। तो 16x को आप लिखा अपने न्यूमरेटर में, 23x का लिखा डिनोमिनेटर में। तो आई एम शोइंग यू द स्टेप्स। अब कैसे इस क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे? तो फर्स्ट स्टेप आपने ये किया ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है? दोनों में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो इंक्रीमेंट करें। तो 16x में क्या ऐड करना है? 10%, बिकॉज फर्स्ट हाउस 10% से इंक्रीज हो चुका है। 10%, और ये 10% किसका है? ऑफकोर्स 16x का ही है। सेकंड में क्या करना है? 477 करना है, इज इक्वल टू में न्यू रेशियो इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 11:20। दैट्स इट। तो 16x में प्लस 10% करें ऑन द कैलकुलेटर, इट बिकम्स 17.6x मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 23 into 11 is how much? 253x प्लस 477 इंटू 11 भी कर लेते हैं, तो आपका रिजल्ट आता है कितना? 5247। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई एंड गेट द रिजल्ट। सो 352x minus 253x is equal to 5247। सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5247 divided by 99 and you are getting 53। तो वैल्यू ऑफ x is 53। x का वैल्यू 53 है, बट हमें क्या चाहिए? प्राइस ऑफ बोथ द हाउसेस। तो फर्स्ट का आपने प्राइस क्या लिया था, क्या लेट किया था? 16 ऑफ x। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 53, एंड सेकंड का आपने लेट किया था 23। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 53। तो दोनों का आंसर आपका आ चुका है 848 एंड 1219। So these are the prices. So in this way you can easily get your result. Understood? Perfect. So Shifa says all clear. Ritika clear. Perfect. So I think it is clear till here. Now one more example and then we will move on the exercise question, that is first A. So the last illustration, example number 3, find in what ratio will the total wages of the workers of a factory be increase or decrease? क्या करना है आपको? टोटल वेजेस को किस रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज करना है? इफ देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो रहे हैं आपके? रिड्यूस हो रहे हैं, दैट इज इन द रेशियो ऑफ 15:11। तो आप इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं साइड में, number of workers is getting reduced in the ratio of 15:11 and wages को हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। wages कौन सा? wages पर वर्कर। wages पर वर्कर को हमने इंक्रीज किया इन द रेशियो ऑफ 22:25। नाउ नंबर ऑफ वर्कर्स है, wages है। अब आपको क्या देखना है? टोटल वेजेस। टोटल वेजेस कैसे आता है? नंबर ऑफ पर्संस मल्टीप्लाई बाय देयर वेजेस। नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं, उनकी वेजेस क्या है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द टोटल वेजेस। तो हमें क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग टोटल वेजेस। ओके, तो यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी है, बस इस चीज को समझना जरूरी है। ऑलराइट,
Okay, so everybody is saying clear till here. That's good. सो अभी तक हमने क्वेश्चन में क्या देखा है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं. फाइंड इन व्हाट रेशियो, पहले क्वेश्चन बता रहा है आपको फाइंड क्या करना है. इन व्हाट रेशियो द टोटल वेजेस ऑफ द फैक्ट्री इज इंक्रीज और डिक्रीज. आपको ये देखना है कि टोटल वेजेस में कितना चेंज हुआ है, उसका रेशियो पता लगाना है. अब आपको पहले दे रखा है नंबर ऑफ वर्कर्स कम हुए हैं और उनका वेजेस रेट बढ़ा है. ऑलराइट, तो पहले हम क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी एक्स. नंबर ऑफ वर्कर्स को हमने क्या अज्यूम किया है, एक्स. एंड वेजेस रेट को आपने क्या अज्यूम किया है, वाई. वेजेस रेट का मतलब हो गया वेजेस पर वर्कर. अब टोटल वेजेस कैसे आता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, एक्स इंटू वाई. दिस इज द टोटल वेजेस. तो ये है इनिशियली, स्टार्टिंग में एक्स वर्कर है, वाई उनकी वेजेस है, तो टोटल वेजेस कितना हो गया, एक्स वाई. अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, चेंज जो हुआ है उस चेंज के अकॉर्डिंग क्या इंपैक्ट आया है. तो अभी हम क्या लिखेंगे, न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स. न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स. तो अभी 15 से कम होके हम कहाँ आ गए, 11 पे आ गए, तो उसको लिखेंगे आप 11 अपॉन 15x. पहले x था, अब वो कितना हो गया, 11 अपॉन 15 हो गया. 11 न्यू है इसलिए न्यूमरेटर में रखा है, 15 ओल्ड है इसलिए उसको डिनोमिनेटर में रखा है. सो 11 बाय 15x. सिमिलरली न्यू वेजेस रेट, न्यू वेजेस रेट 22 से 25 तक पहुंच गई है, तो न्यू वाले को कहां रखेंगे, न्यूमरेटर में, ओल्ड वाले को डिनोमिनेटर में. एंड वेजेस रेट को हमने लिखा है इन टर्म्स ऑफ वाई, इन टर्म्स ऑफ वाई. अभी क्या करना है, टोटल वेजेस कैलकुलेट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 11 अपॉन 15x एंड 25 बाय 22y. जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर लें. सो व्हाट इज लेफ्ट, 5xy अपॉन 6. 5xy अपॉन 6, ये क्या आ गया आपका, न्यू वेजेस. ओल्ड वेजेस कितना था, x इज टू वाई, एक्स वाई. एंड न्यू वेजेस कितना है, 5/6 एक्स वाई. नाउ सिंपली कंपेयर. कंपेयर किससे करना है, टोटल वेजेस ओल्ड वाला, तो ओल्ड रेशियो न्यू. ओल्ड कितना था, एक्स वाई. न्यू कितना है, 5xy अपॉन 6. दोनों तरफ एक्स वाई है, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आपके पास, 1/5/6. Now multiply both the sides by 6. It becomes 6/5. So this is your final answer. So in this way आप उसको solve कर सकते हैं. So Uzma and Shifa is asking, is my query visible? Yes, your messages are visible. So what Shifa is asking, let's see. शिफा का क्वेश्चन कहाँ गया, शिफा का तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये दिख रहा है रिस्पॉन्ड टू द मैसेज. शिफा यू कैन आस्क हियर. एक बार आप मैसेज टाइप करके भेजें, आपका कौन से पॉइंट पे डाउट है. तो शबनम हैज गिवन द आंसर 6/5. Vishal is saying this question seems difficult, but you can understand. Okay. इस क्वेश्चन में बस एक छोटा सा जो कैलकुलेशन था, वो सब कुछ किसके ऊपर बेस्ड है, आपने देखा होगा एक बेसिक कैलकुलेशन पे बेस्ड, कि टोटल वेजेस कैसे आती है. तो टोटल वेजेस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कि आपके पास कितने वर्कर है फैक्ट्री में. अगर मैंने कहा 10 वर्कर है और उनका वेजेस रेट कितना है, तो मैंने बोला 500 उनका वेजेस रेट है. तो अगर 10 वर्कर है, 500 उनका वेजेस रेट है, तो टोटल वेजेस कितना हो गया, 5000. तो वैसे ही इस गिवन क्वेश्चन में हमने क्या अज्यूम किया, नंबर ऑफ वर्कर्स को ले लिया एक्स एंड वेजेस रेट को मान लिया वाई. तो इनिशियली टोटल वेजेस कितना हो गया आपका, एक्स वाई इनिशियली. उसके बाद हमने क्या किया, कि फिर से लिखा
टोटल वेजेस, इस बार न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, वर्कर 15 से रिड्यूस होके कितने हो चुके हैं, 11 हो चुके हैं। तो 11 इज द करंट पोजीशन एंड 15 इज द ओल्ड पोजीशन। तो 11 अपॉन 15 एक्स, ये हो गया क्या, नंबर ऑफ वर्कर्स। सेम इज फॉर वेजेस रेट, वेजेस रेट इंक्रीज हो गई, पहले था 22, अपॉन में लिखेंगे, अभी 25 है, इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, एंड ये है इन टर्म्स ऑफ वाई। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या आता है, 5/6 XY। दिस इज न्यू वेजेस, और आपके पास ओल्ड वेजेस भी अवेलेबल है। अभी दोनों को कंपेयर करके आपको फाइनल रेशियो कैलकुलेट करना था। अब जैसे आपने फाइनल रेशियो निकाला, एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1:5/6, और इसको जैसे हमने सिंप्लीफाई किया, इट बिकम्स 6:5। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ऑलराइट, सो अगेन हो चुका है। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। परफेक्ट, ओके, so it is clear for everyone. Then one basic doubt, Lippy is asking how to know which one is old and which one is new. Very good question. अब ये देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको सब कुछ बताती है। क्या बताती है, क्वेश्चन ने क्या बोला, देयर इज अ रिडक्शन इन नंबर ऑफ वर्कर्स। क्या लिखा है, रिडक्शन इन नंबर ऑफ वर्कर्स इन द रेशियो ऑफ 15:11। 15 और 11 पहले से कम हुआ है, इसका मतलब क्या था, पहले 15 था और अभी कितना हो गया, 11। सो न्यू कौन सा है, 11। तो क्वेश्चन आपको सब कुछ बताएगा, बस आपकी उसकी इंग्लिश को आपको समझना है। ओके, तो 15 से कम होके 11 हो चुका है, तो 11 इज न्यू। आगे एक और देखें, आगे क्या लिखा है, इंक्रीमेंट इन वेजेस इन द रेशियो ऑफ 22 to 25। तो इंक्रीज हुआ है, 22 से कहां पहुंच गया, 25। तो 25 इज न्यू एंड 22 इज ओल्ड। तो इस तरीके से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ओके, सो नाउ एवरीवन हैज अंडरस्टूड, दैट्स ग्रेट। तो चलिए फटाफट से अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपको आंसर करना है। सो लेट्स फायर राउंड। तो अभी हम रैपिड फायर राउंड खेल रहे हैं, और आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसके साथ में ऑप्शन देना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आंसर की में से देख के आपको नहीं लिखना है, वो फिर चीटिंग मेरे साथ नहीं आपके साथ में हो जाएगा, राइट। तो आपको खुद पे ट्रस्ट करना है, जो आज आपने अभी तक पढ़ा है उस बेसिस पे आपको आंसर करना है कि कौन से क्वेश्चन का क्या ऑप्शन है। ओके, तो चलिए फटाफट से आप आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। व्हाट इज द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15? कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन। ओके, जैनब नयनी से आपको मेरा कमेंट दिख रहा है, यस जैनब, इट इज विजिबल। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मुझे चाहिए कमेंट्स में सभी का, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं सब लोग आंसर करेंगे यहाँ पे फटाफट से। और बहुत सारे लोग YouTube पे भी कनेक्टेड हैं, मोर देन 100 स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड ऑन YouTube एज वेल। तो जो लोग YouTube पे हैं, अगर आप लोग ऐप पे आ सकते हैं तो जरूर आए, बिकॉज वहां पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यस, मोस्ट ऑफ यू, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज गिवन द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। दैट्स परफेक्ट, अमेजिंग अमेजिंग, इतने सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, दैट्स ग्रेट। सो सबसे पहले आंसर दिया है सनतन रॉय, ओके, देन प्रतिष्ठा, पीयूष, शबनम त्रिपाठी, कौशल, अंश, निशी, रितु, माहिन, किंजल, विपुल, ब्रजेश, परी, दिव्या, आयुषी, रवीना, कृतिका, मुस्कान, सौरभ, सौदागर, गणेश, विशाल, सना, उद्देश, अनस, अवनी, मोहित, शुभम, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। So I think everyone is correct now. 15:11 is the final answer. Okay.
फटाफट से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज इज 3:4। एंटीसीडेंट आपका 15 है, तो कॉन्सिक्वेंट क्या होगा? एंटीसीडेंट का मतलब क्या हो गया? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर आपका 15 है, डिनोमिनेटर आपको नहीं पता, लेकिन ये पता है उनको कट करने के बाद आपका रेशियो क्या आएगा? 3:4। 3:4। तो 15 को 3 से डिवाइड करें। क्या करना है आपको? 15 को 3 से डिवाइड करना है, कितना आता है? 5। और उस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, यू आर गेटिंग 20। दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना है। या फिर आप सीधा सा x लिख के सॉल्व कर सकते हैं, जैसा हमने पहले भी किया था। जस्ट राइट x, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड गेट द आंसर। 60 इज इक्वल टू 3x। तो x का वैल्यू आ गया कितना? 20। परफेक्ट। सो फटाफट से आंसर दे दें क्वेश्चन नंबर सेकंड का। यस, एवरीबॉडी हैज गिवन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 20। वेरी गुड। Third one, the ratio of quantities is 5:7. If the consequent of its inverse ratio is 5, then find the antecedent. तो antecedent क्या होगा? तो क्वेश्चन ने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, बट आपको ट्विस्ट नहीं होना है। यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर। फटाफट से बता दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स। इनवर्स का कॉन्सिक्वेंट मतलब एंटीसीडेंट आप कह सकते हैं इसको। क्या आंसर करेंगे? सुषमा इज सेइंग आई हैव ओल्ड बुक्स ऑफ आईसीआई, डू नॉट वरी, चलेगा। यू कैन डू विद दैट एट प्रेजेंट, डू नॉट वरी। सो एवरीवन हैज गिवन द आंसर। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7। तो क्वेश्चन ने क्या गिवन था? ओरिजिनल रेशियो इज 5:7। क्वेश्चन ने बोला इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इनवर्स, तो पहले आपने क्या निकाला? इसका इनवर्स निकाला। ओके, तो कितना हो गया? 7:5। नाउ 5 इज द कॉन्सिक्वेंट, तो एंटीसीडेंट क्या हुआ? 7। दैट्स इट। कुछ भी नहीं करना था। 7 इज योर आंसर। परफेक्ट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट इज फोर्थ वन। यस, फोर्थ है आपका कंपाउंड रेशियो। इसमें सबसे कॉमन डाउट था, अब इसको एक बार में क्लियर कर लेते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? लोअर क्लासेस में आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा, मिक्सचर ऑफ टू और मोर इंग्रेडिएंट्स। दो या दो से ज्यादा चीजों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। जैसे अगर आप चपाती बनाते हैं, तो चपाती बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? व्हीट फ्लावर, गेहूं का आटा लेना पड़ता है, उसमें नमक, उसमें पानी, उसमें थोड़ा सा ऑयल मिक्स करके उसको गूंथना पड़ता है। तो जैसे आप सबको मिक्स कर रहे हैं, इट बिकम्स अ कंपाउंड। वैसे ही यहाँ पे जितने भी रेशियोज आपको दे रखे हैं, सबको क्या करना है? मिक्स कर देना है, कंबाइन कर देना है। कैसे मिक्स करना है? लेट अस अंडरस्टैंड। 2:3 को क्या लिखेंगे? 2/3। 9:4 को क्या लिखेंगे? 9/4। 5:6 विल बी 5/6 एंड 8:10 इज 8/10। इन सबको मिक्स करना है, तो उसके लिए मल्टीप्लाई। ओके, नाउ यू कैन कैंसिल। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दे एंड गेट द रिजल्ट। ओके, सो 2 into 9 इज 18, 3 into 6 इज 18, ये आपका कैंसिल हो गया। 4 को आपने कैंसिल किया, देन 5 into 2 इज 10 एंड देन 10 इज कैंसल्ड। व्हाट इज लेफ्ट? 1/1। 1/1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Yes, KM Gupta is saying Mercury is visible. Yes, KM, it is visible. Okay, okay, everybody. So option number A सबका आंसर आ चुका है। Very good, very good. Now the fifth one. अब फटाफट से rapid fire बता दीजिए सबका आंसर। 5, 6, 7, 8। 5 में डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट का मतलब क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। सिक्स में क्या करेंगे आप? सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट।
दोनों नंबर्स का स्क्वायर रूट आपको करना है। तो 25 का बन जाएगा आपका 5 एंड 36 का बन जाएगा 6। तो 5:6। ओके। तो 7 ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब हो गया क्यूब आपको करना है। क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 3 एंड सॉरी 2 का क्यूब कितना होता है 8 एंड 3 का क्यूब होता है 27। ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। देन कम्स सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। 8 का क्यूबिक रूट 8 का क्यूबिक रूट इट इज 2। 27 का क्यूबिक रूट इट इज 3। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ओके। सो राज क्या कह रहे हैं? राज सिंह, आप टेक्निकल गुरुजी जैसे लगते हैं, आवाज भी वैसी ही है और उनका नाम भी गौरव है। क्या बात, क्या। चलिए, सबके आंसर यहाँ तक आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर नंबर 8, यस, 8 तक सबके आंसर आ चुके हैं। नाइस, नाइस, नाइस। ओके। नाउ द नाइन्थ वन। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। द रेशियो कंपाउंडेड, फिर से करना तो कंपाउंड है, लेकिन किसका? 4:9 का। एंड डुप्लीकेट ऑफ 3:4 का। यहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। क्या ध्यान रखना है? एक तो कंपाउंड निकालना है 4:9 का, तो आपने लिखा है इसको 4/9। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3:4 से करने की गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन ने बोला है डुप्लीकेट ऑफ 3:4। 3:4 का डुप्लीकेट क्या होता है? तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9। 3 का स्क्वायर दैट इज 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। अब इसको आप कैंसिल करें और फिर आंसर बताइए क्या रिजल्ट आता है। 1/4। सो 1:4। ऑप्शन नंबर ए। यस, वेरी गुड, सबने पहले ही जवाब दे दिया है। ऑप्शन नंबर ए। नाइस। बट कुछ ने जल्दबाजी किया है और कुछ ने आंसर बी दिया है। तो अगर आप एक वर्ड मिस कर देंगे तो आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा। ओके। Okay, Miss Harini is asking for every unit, will you solve the exercise questions? Yes, we will be solving most of the exercise question and कुछ questions आपको जरूर homework में भी दिए जाएंगे, so do not worry. Okay, but हाँ क्लास में हम exercise questions करेंगे ताकि उसमें किसी को अगर डाउट हो तो it will be clear. Now the next one. नेक्स्ट कौन सा करेंगे? 10th आपका चलो होमवर्क में डाल देते हैं। 11th क्वेश्चन अभी कर लेते हैं बिकॉज टाइम होने वाला है, 25 मिनट्स आर लेफ्ट। तो थोड़ा सा फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। द रेशियो कंपाउंडेड किस किस का करना है? 4:5। तो हम क्या लिखेंगे उसको? 4/5। 9:7। तो 9/7। ट्रिप्लीकेट ऑफ 3:4 तो सीधा ट्रिप्लीकेट कर दे पहले से ही। तो 3 का ट्रिप्लीकेट 27। 4 का ट्रिप्लीकेट 64। एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 का भी ट्रिप्लीकेट करना है। तो 2 का क्यूब 8। 3 का 27। चलिए अब कैंसिल करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो 27 हम कैंसिल करेंगे पहले, फिर 8 एंड 64 को भी कैंसिल कर दिया। एक और कैंसिलेशन। तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है फटाफट से बता दो। फटाफट फटाफट से बता दो बच्चों, क्या आंसर आने वाला है। ओके। 11th का आंसर आप सभी को बताना है। 11th का आंसर 4/5, 9/7, देन 27/64 एंड 8/27। फटाफट फटाफट से बता दें क्या आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 11 का। कम ऑन।
Yes, anybody with the answer? Yes, option number D. Everyone is saying option number D, 9/70, or you can say 9/70. 9/70 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में है. None of these. None of these. Okay. The 12th one थोड़ा सा अलग है, पर बहुत आसान है. बहुत आसान है. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? A/B is 3/4. A/B कितना गिवन है? 3/4. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ. अब आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है इस रेशियो का. सिंपली क्या करेंगे? ए की जगह पे आपको पुट करना है 3. ए की प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करना है 3. बी की प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करना है 4. दैट्स इट. आपका आंसर आ जाएगा. आपका आंसर आ जाएगा. फटाफट से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और आंसर ले आते हैं. सो 2a, सो 2 इंटू 3 प्लस 3b, सो 3 इंटू 4 अपॉन 3a, सो 3 इंटू 3 plus 4b, so 4 into 4. Now simplify and get the result. 6 plus 12, 18 upon 9 plus 16 is 25. So 18/25, this is your answer, option number D. Okay, option number D. So Renuka is asking how many marks are deducted if answer is wrong. अगर आपने आंसर गलत दिया है तो उस आंसर का तो कुछ भी मिलेगा नहीं, लेकिन 0.25 एक्स्ट्रा डिडक्ट हो जाएगा. ओके, कितना होगा डिडक्ट? 0.25. दैट इज 1/4. उतना डिडक्ट हो जाता है. परसेंटेज में बताओ तो 25% कम हो जाएगा. राइट. ओके, नाउ आई थिंक 13th आप कर सकते हैं. ऐसे हमने एग्जाम्पल भी किए हैं. 14th को भी आप कर सकते हैं. 14th क्वेश्चन चलिए मैं करा देता हूं. द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2, 7, 11. ये क्या है? एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इस रेशियो में है. अब आपको क्या बताना है? उनका कितना डिग्री का मेजरमेंट है. तो एक ट्राइंगल में तीनों साइड्स का जो टोटल ऑफ एंगल है वो कितना होता है? दैट इज 180 डिग्रीज. ये आपको पता होना चाहिए. वैसे पता भी होगा, क्लास 6 से हम पढ़ते आ रहे हैं. जब भी हम एक ट्राइंगल की बात करते हैं तो इस ट्राइंगल में आपके जो भी एंगल है इन तीनों का सम, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना होता है? 180 डिग्रीज. तो आपको क्या करना है? इस 180 को 2:7:11 में डिवाइड करना है. तो कैसे करेंगे? 180 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय द टोटल. टोटल में कितना आएगा? 20. 2/20. सो इट कम्स 36 डिग्री. देन 180 इंटू 7/20, तो कितना आता है आपके पास? सॉरी, यहाँ पे आप कितना लिखेंगे? 18 लिखेंगे. 18 डिग्री. बस 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा? 18 डिग्री. सेकंड में 18 इंटू 7, 9 इंटू 7 कर देते हैं फटाफट से, 63 डिग्रीज. एंड देन द थर्ड वन 11. सो 180 इंटू 7/20, सॉरी 11/20. So 9 into 11 is 99. So 18, 63 and 99. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, 15th बहुत इजी है. 16th पे आते हैं. 16th क्वेश्चन, ये पैटर्न भी कई बार एग्जाम में आता है. ये पैटर्न भी कई बार एग्जाम में आता है. बहुत इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं. तो इस क्वेश्चन से थोड़ा सा आपको बच के रहना पड़ेगा. इजी है बट मिस्टेक्स हो जाती है.
चलिए पहले आप लोगों को आंसर बताना है 16 का कैसे आप सॉल्व करेंगे, उसका क्या आंसर है। आनंद अर्न्स ₹80 in 7 hours and Pramod ₹90 in 12 hours. Find the ratio of their earnings. तो उनकी अर्निंग का रेशियो कैलकुलेट करना है। अर्निंग का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दिस यू हैव टू आंसर। चलिए फटाफट एक बार बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। चार ऑप्शन आपके पास है, तीन में से कुछ मैच हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। चलिए किंजल ने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर ए, 32 रेशियो 21। एनीबडी एल्स विद आंसर? 16 का मुझे आंसर चाहिए पहले। आनंद एंड प्रमोद, आनंद एंड प्रमोद। आनंद का अर्निंग है ₹80, प्रमोद का अर्निंग है ₹90। अब कुछ लोगों ने क्या किया है, 80:90 किया, 00 कैंसिल, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दिया। बट ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। आपको क्या करना है, दोनों का टाइम सेम नहीं है, दोनों का यूनिट सेम नहीं है, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ए ने काम किया है 7 आवर्स और पी ने काम किया है 12 आवर्स, तो दीज टू आर नॉट कंपेरेबल। तो कंपेयर करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पर आर अर्निंग। दैट मीन्स उनकी आर्ली अर्निंग कितनी है। तो ए ने किया 7 आवर्स तो डिवाइड बाय 7, प्रमोद ने किया है 12 आवर्स तो डिवाइड बाय 12। और अभी आपको रेशियो कैलकुलेट करना है। तो अभी आप अपना रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर बता दें फाइनल आंसर। तो इसमें आप 0 से 0 को कैंसिल कर दें। देन 7 एंड 12 एलसीएम कितना होगा, 84। एलसीएम आपका 84 आ चुका है। नाउ 8 इंटू 12 कितना होता है, 96 एंड 7 इंटू 9 इज 63। तो 96 एंड 63 को आप कैंसिल करके अपना फाइनल आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किससे आप कैंसिल करना चाहते हैं, यू कैन कैंसिल विद द हेल्प ऑफ 3। 3 से आप कैंसिल करेंगे, it is 32 and 21। 32 and 21, option number A is the correct answer. Okay, so yes, many of you have given the answer. Lipi has given D, no Lipi, option number A is correct. So Ritika has given, then Rajesh, Priyanshu, Nishi, Srasti, Bhavya, Priyanka, Divya, Raj has given D, Ansh, Ayushi, Rani, Yes, Anand, Ganesh, Pratishtha has given C. No, C is wrong. C मैंने कहा था कुछ लोगों ने जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर सी दिया है। तो यस, मेजॉरिटी हैज गिवन द आंसर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 17। The ratio of two numbers is 7:10 and their difference is 105। देखें इस क्वेश्चन में दो कंडीशंस गिवन है, जो ऑप्शन दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो फटाफट से चेक कर लेते हैं कौन इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट में आप चेक करें, डिफरेंस 105 का है, तो फर्स्ट 105 वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है। 7:10 में क्या ये दोनों है, यू कैन ट्राई कैंसिलेशन विद 5। 5 से आपने कैंसिल किया, इट इज 40 एंड देन 61, सो दिस इज रॉन्ग आंसर। 185 एंड 290, 105 का डिफरेंस है। देन फिर से आप कैंसिल करके देखें 5 से, इट इज हाउ मच, 37 एंड 48, सो इट इज अगेन रॉन्ग। थर्ड वन, 245 एंड 350, तो इस बार फिर से कैंसिल करते हैं। तो अभी आप 35 से भी कैंसिल कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग है तो। अदरवाइज आप दो बार में कैंसिल करें, पहले 5 से कैंसिल करें और उसके बाद 7 से कैंसिल करें, you will get 7:10। So option number C is your correct answer. Option number C is the correct answer.
All right. Now 18th क्वेश्चन। चलिए टाइम कम बचा है, फटाफट से कुछ क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में किसको डाउट है? अभी किसी ने डाउट पूछा था क्वेश्चन नंबर 18 में। चलिए 18 को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ओके, शेख जमील इज आस्किंग 16 क्वेश्चन में 96 एंड 63 कैसे आया? ओके, सी हमने यहाँ पे क्या लिया है? एलसीएम। वी हैव टेकन एलसीएम ऑफ 7 एंड 12। तो 7 और 12 का एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में आता है कितना? 84। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई। 84 अपॉन 7 is 12 and 12 into 8 is 96. 84 upon 12 is 7, 7 into 9 is 63. So in this way you can calculate. चलिए 18th वन। 18 थोड़ा सा डिफरेंट है बट इजी है। कैसे करना है समझ लेते हैं। पी क्यू आर द थ्री सिटीज। ठीक है, लिख लेते हैं। पी क्यू आर थ्री सिटीज हैं। The ratio of average temperature between P and Q is 11 is to 12. 11 is to 12. P and R का रेशियो गिवन है 9 is to 8. 9 is to 8. Okay. Then find out the ratio between Q and R. तो Q and R का रेशियो कैलकुलेट करना है। नाउ एक सिंपलेस्ट ट्रिक मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूं। इसमें एक नंबर ऐसा होगा, जो एक रेशियो ऐसा होगा जो दोनों जगह पे रहेगा। लाइक P दोनों रेशियोज में अवेलेबल है, एक कोई ना कोई कॉमन क्वांटिटी रहेगी। तो P दोनों के अंदर अवेलेबल है। राइट, यू कैन सी दिस क्लियरली। P दोनों रेशियो में अवेलेबल है। अभी आपको क्या करना है? फर्स्ट वाले रेशियो को, पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई करना है 9 से। मल्टीप्लाई बाय 9। एंड सेकेंड वाले रेशियो को क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 11। सिंपल ट्रिक है और कुछ भी नहीं करना है, आपका आंसर आ जाएगा। पूरे रेशियो को 9 से और यहाँ 11 से इंटरचेंज कर देना है सिंपली। तो 11 इंटू 9 इज 99। 12 इंटू 9 इज 108 एंड 11 इंटू 8 इज 88। अब आपको रेशियो क्यू एंड आर का पूछा है, तो इन दोनों पे ही फोकस करें। कैंसिल एंड गेट द आंसर। 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 से कैंसिल करते हैं। यू आर गेटिंग हाउ मच? 27 रेशियो 22। ऑप्शन नंबर बी। So this is your answer. Okay. So Harini is saying, please explain in English. See, in this given question, the first ratio is between P and Q, and second ratio is between P and R. So always in such kind of question, one value will be common. So like in this question, P is common in both the ratios. P is common in both the ratios. Now, what you have to do, multiply the value of P with other ratio. Like we are multiplying 9 with the first ratio, with the second ratio. Just multiply them and you will get the answer. Okay. So now the answer is 11, 27 is to 22. Okay, 19 is very easy. Simply x की प्लेस पे आपको पुट करना है 3 and substitute 4 for y. Y की प्लेस पे 4 को सब्स्टिट्यूट करें, you will get the answer. Okay. Now the next doubt is, I think, in question number 20. 20 seems difficult, but it is not at all difficult. Difficult नहीं है ये। क्या करना है आपको? Let us read the question. If P is to Q is sub-duplicate of the ratio, then find out the value of x square. चलिए, तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं पहले जैसा क्वेश्चन ने बोला है। P is to Q एक रेशियो है, so P upon Q. Now this is the sub-duplicate, so P minus x square upon Q minus x square. तो इसका क्या करना है? सब डुप्लीकेट करना है, देन इट विल बी P is to Q. तो सब डुप्लीकेट करने के लिए यू हैव टू पुट स्क्वायर रूट।
ओके, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, मैंने नया कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ इंग्लिश को पढ़ के मैथ्स में लिखा, राइट। तो सब डुप्लीकेट रूट इक्वल टू पी टू क्यू। अब मुझे क्या चाहिए, थोड़ी सी एलजेब्रा, थोड़ी सी एलजेब्रा, और एक्स स्क्वायर का रिजल्ट आ जाएगा। रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पिछले 5-6 सालों से, जब भी हमें रूट को हटाना होता है हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। तो चलिए परफॉर्म करते हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आपको एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को एक तरफ ले लेते हैं, सो यू कैन राइट दिस हियर, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। चलिए ये हमने अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद क्या कर सकते हैं, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लें, तो एक्स स्क्वायर देन क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इधर क्या कॉमन आ रहा है, पी क्यू, सो वी कैन राइट क्यू माइनस पी। ऑल राइट, नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी को भी हम पिछले 5-6 सालों से जानते हैं, तो इस आइडेंटिटी का यूज किया जाएगा क्यू प्लस पी एंड क्यू माइनस पी। ओके, अब देखते हैं क्या कुछ कैंसिल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, q माइनस पी इज गेटिंग कैंसल्ड, तो क्या बच गया है बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। सो दिस इज द आंसर, दिस इज योर आंसर। तो जो डाउट था किसी का, क्वेश्चन नंबर 20 में मनीष का डाउट था, देन शिवम खन्ना का डाउट था, देन और किसका डाउट था, नेहा कुमारी का डाउट था, सबका डाउट आई थिंक सॉल्व हो चुका है। Madhu is asking, we have to maintain two registers for maths, one rough and other is main one. Yes, you can maintain that. एक आपका फेयर नोटबुक ऐसा आपको मेंटेन करना है जिसमें आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज, अकॉर्डिंग टू चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर अभी आपका स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स भी आप सॉल्व करना चाहें वो कर लें, प्लस बैक क्वेश्चन सारे करने हैं, और उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन, कुछ भी आपको मिस नहीं करना है। कभी आपको लगता है कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसका स्पेस छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं, लेकिन नोटबुक आपको पूरा सीक्वेंस में मेंटेन करनी है, और ये आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। साथ ही जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने क्लास में डिस्कस किए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपको नोट डाउन कर लेने हैं नोटबुक में, वो भी आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, और सीधा आपको पढ़ते ही क्लिक होगा कि मैंने आपको क्लास में कैसे एक्सप्लेन किया था, वो पूरा आपको वीडियो माइंड में रिकॉल हो जाएगा, वो रील आपके माइंड में चल जाएगी, राइट। तो वैसे भी हम लोग एडिक्टेड हैं रील्स को देखने के, तो वो रील जो है ऑटोमेटिक आपके माइंड में चल जाएगी। Okay, so Bindu is asking, please explain once again in English. Okay, do not worry. See, in this question, it was saying the subduplicate ratio of the given ratio is P to Q. So since it is subduplicate ratio, we have applied square root sign. Okay, so after applying the square root sign, for removal, what we have to do? Just squaring both the sides. So in the first step, we have done squaring both the sides, and after squaring, bring x square on one side and other on and remaining on other side. So in this step, we have taken common. After taking common, we can open with the help of the basic identities and then do some cancellations. So after cancellation, you are getting your final results. Okay. नेहा कुमारी इज आस्किंग, मैथ्स का पेपर हिंदी में आएगा या फिर इंग्लिश मीडियम में? सी, इफ यू आर ऑप्टिंग हिंदी देन योर पेपर विल बी प्योरली इन हिंदी, एंड इफ यू आर ऑप्टिंग इंग्लिश देन योर पेपर विल बी प्योरली इन इंग्लिश। सो नो मिक्स एंड मैच इन एग्जामिनेशन, it will be 100% pure.
Okay, understood? So if anybody is having Hindi, then you have to practice Hindi terms, not only Hindi terms, maths is common for everybody, calculator is common, but you have to be familiar with Hindi terms. Okay. Now 21 is exactly similar to what we have. Now you can do this. 22, you have to simply substitute the value and solve. So this you can also do. Then 23 type question we have covered. Yes, 24 again. This is the question of savings, income, expenditure, and saving. So this also we have covered. Income minus saving is equal to expenditure. Form that equation, and figures are also same. All those figures are also same. So this is same as example which we have covered. Now the last one, the ratio between the speed of two trains is 7 is to 8. Train 1, train 2. The speed ka ratio 7 is to 8. If second train runs 400 in 5 hours, find the speed of first train. तो फर्स्ट ट्रेन का आपको पता लगाना है. तो 400 kilometers in 5 hours. So what is the speed? The speed is 80 kilometers per hour. Okay. Second ट्रेन का स्पीड 80 kilometers per hour. तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड क्या होगा? x आप मान सकते हैं ना. क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व. तो 8x equal to 7 into 80. So x equal to 70. So the speed is 70 kilometers per hour. 70 kilometers per hour. Sushma is asking, I have old ICAI books. Is it okay? Yes, it is okay. And for any other chapter which is additional, you can take the printout. So not at all a problem. You can do that. Okay, now you can take the screenshots of what we have done today. So let me bring from the beginning. Okay, I am showing you can take the screenshot one by one. Okay, done. And this video will also be get saved. तो जो लोग बाद में देख रहे हैं वो उसका स्क्रीनशॉट बाद में भी ले सकते हैं. तो उसके लिए भी चिंता नहीं करें. तो फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट कवर कर लें. And those who want to connect after the class also, like in the evening or some doubts, you can download the application, the Students Clinic. Okay, so you can get additional practice questions. You can practice test series here also, or if you want some Hindi questions, then also. Okay. Taken. Farin is saying, now everything is clear. You're a brilliant teacher and enjoyed maths for the first time. Really thankful. That's great, Farin. Good to hear that. Normally, maths is a phobia for students, but if we focus, then it is very much easy. And maths is very scoring subject.
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैथ्स सिर्फ मार्क्स लाने में हेल्प नहीं करती है, मैथ्स आपकी मेंटल एबिलिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो अगर आप मैथ्स रेगुलरली पढ़ते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी स्ट्रेंथन होती है और इसका आपको आपकी हर फील्ड में बेनिफिट मिलता है, चाहे हम जॉब की बात करते हैं, बिजनेस की बात करें। सो मैथमेटिकल माइंड ऑलवेज होना चाहिए, चाहे वो पर्सन किसी भी फील्ड में है, कोई भी कोर्स क्यों ना कर रहा हो, mind should always be mathematical. Okay, so I think we have done everything now. Next series, next topic will be proportion, and that we will be covering in the next class, that is day after tomorrow. Okay, so Divya is asking about 21. Yes, so let me give you the hint for question number 21. 2s ratio 3t is the duplicate ratio of, तो सिंस क्वेश्चन ने कहा है ये आपका डुप्लीकेट रेशियो है, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर लेना है। तो 2s - p का होल स्क्वायर अपॉन 3t - p होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2s/3t। ओके, सो दिस इज द अरेंजमेंट। नाउ यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यू विल गेट द आंसर। ओके, सो नेहा कुमारी से थैंक यू सर, आपने हिंदी में भी बहुत अच्छा समझाया, दैट्स ग्रेट। अंजलि सिंह फर्स्ट सेशन वेंट ग्रेट। अंजलि सिंह थैंक यू फॉर टीचिंग अस। Lisa Rani says thank you for your time, we are very much grateful। Himanshu Sharma is saying maths is easy peasy, that's great। Then Madhu is saying we will be able to see the solved example by you in recorded lectures, yes, you can see all these in the recording also। Saurabh said I really enjoyed my Ansh is saying my teacher says maths would say maths is not necessary, which give us negative impact। See, maths is very important and interesting, yes, Kambeshwari is saying this। Okay, great, so finally the session is over now, so let's meet again in the next session, till then bye everyone, take care and see you soon।